Mothers really put up so much effort for us without expecting anything in return. Anyhow, we are missing the whole point of the anchoring of the primary section. And do tell, what is that? Introducing ourselves, duh. Oh, yes, I have completely forgotten about that. I am Kutnal Khadija. And I am Ariba Kalsekar. We are going to anchor the primary section. We should extend our hands in front of Allah subhanahu wa ta'ala by reciting Quran. True, Kirat? Would you let me complete? My apologies. I was very excited. The voice is just so soothing. MashaAllah. Before you start daydreaming again, let's call upon our students to recite the Kirat. Please do. I request Anas and Saad to recite the Kirat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه
يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وذر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة وتظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق صدق الله العظيم. I feel so blessed, Alhamdulillah, completely awestruck. That's the beauty of it. I could hear it on and on. It kind of reminds me of a prophet's resting place, an epitome of serenity. I'll do you one good. Don't hold out on me. That's a rare occurrence. I'm serious. Let me introduce you to the Naat. Assalamu alayka ya Rasulullah, sung specifically at your beloved prophet resting place, sending him our appreciation for his cause. I cannot wait to hear it. You wouldn't have to. Please welcome Zikra Jaitwa to sing the Naat. السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله رقت عيناي شوقا ولطيبة زرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدى يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغار حراء تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول
السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله तुम हबीबे किबरिया हो और इमामुल अंबिया हो दो जहां के पेशवा हो शाफ़ए रोज़े जज़ा हो रहमतल लिल आलमी हो और शफ़ीउल मुज़नबी हो फ़ज़्ले रब से क्या नहीं हो बाद रब के बस तुम ही हो अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलामु अलैका हबीबी या नबी अल्लाह अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलामु अलैका हबीबी या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह I am conflicted. Should I be mad at you for not introducing me this earlier? Or should I thank you for providing me with this privilege? It's sunnah to share with people whatever little we have. Even a smile is highly preferred. So beautiful, so rewarding. That is why we should value the life Allah has provided us with. You are right. We should follow the mission we are sent to complete, all while following the rules above and value the cherished life Allah has blessed us with. So let's call upon our fellow students to display to the skit the value of life. Good afternoon to one and all. Today we are going to present a skit on the value of life. One day Jamal runs towards his grandfather. Grandpa, I have a question for you. Grandpa keeps his newspaper aside and looked at Jamal with a smile. Yes, Jamal. What is your question? Grandpa, what is the value of life? I will let you know that, but first, do me a favor. Grandpa gets up from his chair and walks towards his cloth and removes a precious looking stone. Jamal, go to the market and keep this stone on the table and don't say a word. If someone asks you about the price, just show them your 2 fingers. Sure, Grandpa. Jamal sets off the market. Wait, The lady sees the stone in Jamal's hand. how much is it for? I need to put in my fish tank. Oh, $2? Fine.
I will buy it. Jamal rushes home. Grandpa, a lady wants to buy this stone in $2. Okay, son, now go to the retail store and keep the stone there. And if someone asks you, just show them your 2 fingers. Jamal reaches the store. Why are you a kid? He noticed the stone and instantly asks him to sell him the stone. $20. Fine, I will pay you the amount for such a precious looking stone. Jamal rushes home to Grandpa. Grandpa, this retailer is ready to buy this stone for $20. Son, now I want you to go to the museum and keep the stone there. And if someone asks you, just show them your 2 fingers. Jamal goes to museum. A wise-looking man noticed the stone. Kid, how much this stone for? Oh, $200. I will buy it. Jamal gets astonished. After hearing this, he runs to meet Grandpa to let him know about this. Grandpa, that wise man is willing to buy this stone for $200. Now, son, I want you to go to the stone merchant and show him the stone. And if he asks you, just show him your 2 fingers. Jamal sets off the stone merchant. As Jamal enters the store, the merchant notices the stone. Oh my gosh, that is very precious. How much do you want next in this stone? $2,000? Fine, I will pay you the amount. Jamal rushes home. Grandpa, the merchant wants to buy this stone for $2,000. Do you see, son? This is the value of life. Your life is just as precious as this stone. If you stay with pious people, you will gain knowledge and will be treated the same. And if you are in a bad company, you too will treated the same way. What have you learned from this? For starters, that we are judged and on by the company we keep and by the manners we exhibit. What is my identity as a person? Who am I? Who are you? Let me clear it out for you. Please welcome Pathan Aisha to give a speech on who I am. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am soft-hearted, but people assume that I am a hardliner. Guess who I am? I don't distinguish people based on caste, creed, race, color, or etc. Guess who I am? I strive for peace because this is what my religion teaches me. Guess who I am? I am tolerant, cheerful, and sincere towards others. Guess who I am? Yes, indeed a Muslim. I am a Muslim who is willing to give up a pleasure for long-term gains, that is akhirah. I am a Muslim who has the ability to settle differences without resentment or anger. I am a Muslim who preserve despite setbacks. I am a Muslim
who knows a life is too short to waste in idle activities. I am a Muslim who has no prejudice, intolerance, hatred, or revenge. I am a Muslim who accepts his mistakes and who does not complain that the rose bush has thorn but rejoices that it bears rose. तुझे ये खौफ के फूलों के साथ काटे, तुझे ये खौफ के फूलों के साथ काटे, मुझे खुशी है कि कांटों के साथ फूल तो है. I am a Muslim who gently and constantly question himself about his action. I am a Muslim who conform to the Quranic commands and those of Prophet Muhammad, peace is upon him. That's the beauty of it. Have you ever seen a peaceful country like this? Not really. We are living after all a peace-loving religion. You are going to adore the next event then. I will. Pray. Tell me, what is it? I'd rather you hear it. Please welcome our friends who'll serenade you completely by their voices. किसने जलाया सवेरे सवेरे लिया जब मैंने ये नामे मोहम्मद बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे लिया जब मैंने ये नामे मोहम्मद लुत्फ आया सवेरे सवेरे अंधेरे में दिल के चरागे मोहब्बत किसने जलाया सवेरे सवेरे अंधेरे में दिल के चरागे मोहब्बत किसने जलाया सवेरे सवेरे अकीदत की मंजिल का बस राज ये है इशा के वजू से अदा हो सहर भी अकीदत की मंजिल का बस राज ये है इशा के वजू से अदा हो सहर भी इबादत का सौदा अंधेरे अंधेरे मुनाफा कमाया सवेरे सवेरे इबादत का सौदा अंधेरे अंधेरे मुनाफा कमाया सवेरे सवेरे अंधेरे में दिल के चरागे मोहब्बत किसने जलाया सवेरे सवेरे अंधेरे में दिल के चरागे मोहब्बत किसने
चमका। खुदा की कसम ये हकीकत है लोगों के बेनूर आँखों में भी नूर चमका। तेरे सज गुंबद को सूरज की किरणों ने जब जगमगाया सवेरे सवेरे। शायर कहते हैं सब्ज गुंबद को सूरज ने जगमगाया। नहीं, हमारा ईमान ये है दुनिया की सारी चमक दमक सब्ज गुंबद से है। तेरे सब्ज गुंबद ने सूरज की किरणों वो जब जगमगाया सवेरे सवेरे। अंधेरे में दिल के चरागे मोहब्बत किसने जलाया सवेरे सवेरे। अंधेरे में दिल के चरागे मोहब्बत किसने जलाया सवेरे सवेरे। ख्याले मदीना में नींद आ गई जब करार आ गया बेकरारी को मेरी। ख्याले मदीना में नींद आ गई जब करार आ गया बेकरारी को मेरी। ये सब्ज गुंबद के मैंने नजारे बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे। ये सब्ज गुंबद के मैंने नजारे बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे। अंधेरे में दिल के चरागे मोहब्बत किसने जलाया सवेरे सवेरे। अंधेरे में दिल के चरागे मोहब्बत किसने जलाया सवेरे सवेरे। सवेरे 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 सवेरे। What a beautiful surprise. I love this nasheed. By the way, did you know my daddy promised me that he'll buy a gift for me if I score the first rank? And did you score? What rank did you get? Second. Oh no, no gift then? That's the catch. I still got it. What? How? Fathers are such big liars, I swear. I know, right? I'm sure everybody will agree. Everybody? Yes, doubt it. Wait, I'll have my friend Aisha Khan to solidify this claim. I'd like to see that. Aisha, please come on the stage to recite the poem Daddy is a Liar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is most handsome, the cleverest, the kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do
well as cool. That is just great. But he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. But I love my daddy. I am proud to be his girl. For a moment there, I thought you were kidding. Fathers really do so much for us, don't they? Of course, I've got nothing to give him, but yet I get so many things from him. So selfless. True that. By the way, our brothers Saad Siddiqui and Anas Qazi have bestowed the honor of listening the Qiraat upon us. I think our brothers backstage have prepared the same with translation. I was coming to that, but I assumed the Qiraat translation revolved around Surah Hujurat. It does? But you said they prepared the same. I did not. I said. Never mind. Please come on the stage, Mikdad, Ammar, Ehraz, and Saad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद के शर से. I seek the protection of Allah from the cursed shaitan. मी शापिशिलांकडून अल्लाहशी शरण शोधतो. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है. In the name of Allah, the All Merciful, the Very Merciful. अल्लाहच्या नावाने जो कृपाशील व दयाळू आहे. या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. हे ईमान वालों, ना तो कोई आदमी किसी दूसरे आदमी का मजाक उड़ाए. हो सकता है कि वो जिनका मजाक उड़ा रहे हैं खुद उनसे बेहतर हो, और ना औरतें किसी दूसरी औरतों का मजाक उड़ाए. हो सकता है कि वो जिनका मजाक उड़ा रही हैं खुद उनसे बेहतर हो. O those who believe, no man should ever mock at other men, since it is possible that the latter are better than the former. Nor should women ever mock at other women, since it is possible that the latter women are better than the former ones. हे श्रद्धावान लोको, कोणत्याही एका जनसमूहाने दुसऱ्या जनसमूहाची थट्टा उडवू नये. समवत ते त्यांच्यापेक्षाही चांगले असू शकतील व तसेच स्त्रियांनी दुसऱ्या स्त्रियांची थट्टा उडवू नये. समवत त्या त्यांच्यापेक्षाही चांगले असू शकतील. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. और तुम एक दूसरे को ताना न दिया करो और न एक दूसरे को बुरे अलकाब से पुकारा करो. And do not find faults with one another, nor call one another bad nicknames. आणि आपल्या स्वतःच्या लोकांची निंदा नालस्ती करू नका व तसेच एकमेकांना विपर्यास केलेल्या नावांनी शक मारू नका. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن
ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ईमान लाने के बाद गुनाह का लगना बहुत बुरी बात है और जो लोग इन बातों से बाज ना आए तो वो जालिम लोग हैं. Bad is the name of sinfulness after embracing faith, and whoever does not repent, such people are the wrongdoers. श्रद्धा बाळगल्यानंतर वाईट नाव प्राप्त करणे हे खरोखरच वाईट आहे आणि जे लोक भ्रष्टता पावत नाहीत ते दुराचारी लोक होत. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ए ईमान वालों, बहुत से गुमानों से बचो, बाज गुमान गुनाह होते हैं. O those who believe, abstain from many of the suspicions. Some suspicions are sins. हे श्रद्धावान लोको, अधिक संशयापासून दूर राहा आणि लक्षात ठेवा काही बाबतीत संशय पाप जवळ नेतो. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. और किसी की टोह में ना लगो और एक दूसरे से गीबत ना करो. And do not be curious to find out faults of others, and do not backbite one another. आणि गुप्तशिरासारखे टेहळणी करू नका व तसेच एकमेकांच्या चहाड्या करू नका. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. क्या तुमसे कोई ये पसंद करेगा कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? इससे तो खुद तुम नफरत करते हो. Does one of you like that he eats the flesh of his dead brother? You would abhor it. तुमच्यापैकी कोणाला आपल्या मरण पावलेल्या भावाचे मांस खायला आवडेल का? तुम्ही खचितच आणि गोष्टीचे तिटकारा करा. واتقوا الله إن الله تواب رحيم. और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह बड़ा तौबा कबूल करने वाला बहुत मेहरबान है. And fear Allah. Surely Allah is most relenting, very merciful. आणि अल्लाहच्या वेळ बाळगा. अल्लाह निश्चय वारंवार करुणा करणारा व दयाळू आहे. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. ए लोगों, हकीकत ये है कि हमने तुम सबको एक आदमी और एक औरत से पैदा किया. O mankind, we have created you from a male and a female. हे मानवांनो, आम्ही तुम्हाला नर आणि नारी यांच्यापासून निर्माण केलेले आहे. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. और तुम्हें मुख्तलिफ कौमों और खानदानों में इसलिए तकसीम किया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको. And made you into races and tribes, so that you may identify each other. आणि तुम्हाला एक दुसऱ्यांना ओळखता यावे म्हणून अनेक जाती व संप्रदाय बनवले आहेत. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. दर हकीकत अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम में सबसे ज़्यादा मुत्तकी हो. Surely the noblest of you in Allah's sight is the one who is the most pious of you. अल्लाहच्या सन्नीत तुमच्यापैकी सर्वाधिक आदरणीय तोच होय जो तुमच्यामध्ये सर्वाधिक सदाचरणी आहे. إن الله عليم خبيर. यकीन रखो अल्लाह सब कुछ जानने वाला, हर चीज़ से बाखबर है. Surely Allah is all knowing, all aware. निसंशय अल्लाह हा सर्वज्ञ आणि सर्व गोष्टीचे जाणीव असणारा आहे. MashaAllah, that was beautiful. I know, right? Well, now I was surprised for you. You try to be so mysterious. It's because I am. Now make way. Our friends are patiently waiting for their turn, and I wouldn't dream of testing it.
सरकार मदीना लाए, अनवार मदीना आए, सरकार मदीना लाए, अनवार मदीना। है कदम्बो से रिसालत गुलो गुलज़ारे मदीना, है कदम्बो से रिसालत गुलो गुलज़ारे मदीना। कुंदनी रंग है गहरा, है लिबास आज सुनहरा, कुंदनी रंग है गहरा, है लिबास आज सुनहरा, चांदनी रात ने पहना। तलाल बद्र अलैना, तलाल बद्र अलैना, तलाल बद्र अलैना, तलाल बद्र अलैना। आए सरकार मदीना लाए, अनवार मदीना आए, सरकार मदीना लाए, अनवार मदीना। लोगों आवाज दो सबको, देख लो कास दे रब को। लोगों आवाज दो सबको, देख लो कास दे रब को। रोशनी हारे हिरा की मिल गई पर्दे शब को, रोशनी हारे हिरा की मिल गई पर्दे शब को। बारिशे नजमो कमर है, आज से हुक्म सहर है, बारिशे नजमो कमर है, आज से हुक्म सहर है। रात को रात ना कहना, तलाल बद्र अलैना, तलाल बद्र अलैना, तलाल बद्र अलैना, तलाल बद्र अलैना। आए सरकार मदीना लाए, अनवार मदीना। हाशमी ओ मुत्तलबी है, फख्रे उम्मी ओ अबी है, हाशमी ओ मुत्तलबी है, फख्रे उम्मी ओ अबी है। आप ही हक के नबी हैं, दाफ़े तीरा शबी है, आप ही हक के नबी हैं, दाफ़े तीरा शबी है। मुझद हो नाए बशर को अब तमन्नाए सहर को, मुझद हो नाए बशर को अब तमन्नाए सहर को। कुश्ते शब नहीं रहना, तलाल बद्र अलैना, तलाल बद्र अलैना, तलाल बद्र अलैना, तलाल बद्र अलैना। आए सरकार मदीना लाए, अनवार मदीना आए, सरकार मदीना लाए, अनवार मदीना। दिल ने पाई है मुरादे, उनकी राहों को सजा दे। दिल ने पाई है मुरादे, उनकी राहों को सजा दे। गुल बिछाए हैं सबाने, आओ हम आँखें बिछा लें। गुल बिछाए हैं सबाने, आओ हम आँखें बिछा लें। चांद उतरा है लिए ताज, मिनसनियाते वदा आज। चांद उतरा है लिए ताज, मिनसनियाते वदा आज। वजब शुक्र अलैना, तलाल बद्र अलैना, तलाल बद्र अलैना, तलाल बद्र अलैना, तलाल बद्र अलैना। आए सरकार मदीना लाए, अनवार मदीना आए, सरकार मदीना लाए, अनवार मदीना।
हैं कदम्बों से रिसालत गुलो गुलज़ारे मदीना, हैं कदम्बों से रिसालत गुलो गुलज़ारे मदीना। कुंदनी रंग है गहरा है लिबास आज सुनहरा, कुंदनी रंग है गहरा है लिबास आज सुनहरा, चांदनी रात ने पहना तलाल बदर अलैना, तलाल बदर अलैना, तलाल बदर अलैना, तलाल बदर अलैना। आए सरकार मदीना लाए अनवार मदीना, आए सरकार मदीना लाए अनवार मदीना। A nasheed? It is safe to say I didn't expect it. Why not? I can still hear the rhythm. If I were you, I wouldn't waste my time introducing and explaining every final detail of an event. Remember, you have to give hisab of everything on the day of judgment. No true words have been spoken. However, I insist that for Yantharadra, a standard fifth, does the honor of giving a speech on the day of judgment. Respected guests, principal, teachers, and my dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I am going to present a speech on the day of judgment. All eyes on you as you make your way in plain view. Every creation from every nation is sending you. You are subdued by the angels as they pull you through to finally meet the one who created you. You receive your book of deed. Indeed, it's exactly what it seems. A detailed account of exactly who you used to be. Every moment of jealousy, envy, and slander against your peers. Every deed that was thrown away because it just wasn't sincere. How much regret is there in your heart? How ashamed are you now? How many blessings did you receive? So many that you couldn't count. As you turn the pages, you are in a state of denial, wondering how you will ever escape from the fate of this trial. Do you recognize these sins? Yes, my Lord, I do. Without a translator, Allah is speaking to you. Over and over again with each sin you feel doomed, wishing you could go back in time and act upon what you knew. But who is there to blame which change never come from you? You love this dunya, but this dunya never loved you too. So was it really worth disobeying your Lord's rules? Even though He never asked you of more, what you could do. Allah will weigh everyone's good and bad actions according to His mercy and His justice. One who excels in goodness will be rewarded, but one whose evils and wrongs overweigh his virtues will be punished. Life on earth is temporary and death is a certain reality. The beginning of this life is the day of judgment, and the hour is coming without any doubt. I wind up my speech thanking you all for paying heed to my words. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.